Let's go. Hello, ladies. Welcome to the Underburji podcast, where we 317-year-olds sit and talk about anything and everything. That was Faris, and I'm Bhav. This is our mutual Brown Panthera. Namaste, bhai aur behno. This is Blonde Panthera on the first episode of Underburji podcast. So for today's episode, we'll be discussing about social situations and a few areas and a few topics about God, not religion, God. And yeah, let's get started. Okay, so very firstly, of course, Ruben, what is your stance on the whole God scenario? Like, what do you think? My stance on the whole God scenario ना, अगर मैं बोलने बैठूँ ना तो मैं 10 मिनट तक बोलते रहूँगा. For me, it would be the reason we think that there is God is because we see creation around us. तो अभी अगर तू सोचेगा who created you, obviously तू सोचेगा you didn't create you because you already created. Yeah. And you also want to think somebody smaller than you will create you. सही ना? It must be somebody big in size who must have created you and everything else around you. Now for somebody to create so many things around you, people would think he doesn't have a body like mine. Some people might think he has 8 hands. Right. Some people might think he has 7 heads or 6 heads or 10 heads. So for me, God just becomes an exaggerated version of myself. Right. And if I'm a dog and I wonder who created everything, मेरे दिमाग में तो आएगा कि God is a dog, a big dog. And maybe he has सही 20 legs. वैसे right. So every different person will have a different perception of God according to him, or whether an animal, human being, or plant. I don't know. Right. Everyone has this different perspective in their mind, and समझ गया मैं. some people they connect to God with spirituality. Okay, I myself was shouldn't be saying this, but I was into the atheist side for a while, a very small while, and I said मैं अभी भी हूँ. हाँ मतलब and मैंने literally ऐसा सोचा कि यार क्या मैं भगवान को एक्सक्लूड ही कर सकता हूँ क्या अपनी लाइफ से. एंड जो भी रेगुलर चीज हो रही थी, ठीक है, एक दो दिन तो ठीक होगी बिना भगवान का नाम लिए होगी, बट व्हेन समथिंग बिग हैपेंड, समथिंग वेरी एक्सट्रीम हैपेंड, आई एम लाइक अरे यार भगवान यार ठीक कर दे या ओ शिट मैन, let me tell God to fix this all. इंश्योरेंस भगवान आ ही बन जाता है. हाँ, भगवान आ ही जाता है. And I did not take this into a very religious matter कि यार नहीं मैं तो हाथ जोड़ के आपके सामने प्रेयर करता हूँ और मैं तो आप आ जाता है, भगवान ठीक कर देगा, कोई चक्कर नहीं, हो जाएगा. Like Brown said, इतनी बड़ी क्रिएशन है, सब चीज आपके हाथ में तो है नहीं ना, वो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है बस. And another thing is that the fact that what makes this more interesting is the fact that all three of us come from different religions. And हम तीनों का pretty similar thought है इस पे. The thought being that look, if you look around you, you will realize that for things to be as specific and as pure as they are, it would not have been possible from a normal standpoint, right? It wouldn't have been possible normally. Like what we can do is we can give birth to inventions, we can make chairs, we can make computers, we can make libraries, but we can't, and of course we can make humans, right? But we can't really make something so big. And the thing is ki, I feel like when someone says that they know for a fact God isn't there, वो मुझे थोड़ा गलत लगता है. Because here's the thing, हम amongst all the millions of galaxies in this universe, right, our galaxy is very freaking tiny in front of them. ठीक है? The whole Milky Way without the Earth doesn't look any different at all. अब उस अर्थ के अंदर भी हम लोग हैं जिनको कि आप देख भी नहीं सकते बाहर से, राइट? सो व्हेन यू कंबाइन ऑल दीज फैक्टर्स देन यूर लाइक वी डोंट नो एनीथिंग. हमारे पास इतना सीखने के लिए दैट even if we spend
50,000 lifetimes trying to learn everything, it will still be less. And that is why I think that is very arrogant to say कि ए भगवान तो है नहीं because मैंने देखा नहीं है. अबे तू कैसे देखेगा? भगवान आदमी थोड़ी है जो जन कल्याण नगर में चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है. You know what I'm saying? So that's what I think. I just like to add this one more point. God is a very, very, very big mind game. You know? Trust me. You know, आप काम कर रहे हो, आप अपने टेबल पे बैठे हो, आप काम कर रहे हो, आप 24 घंटे बहुत ज़्यादा हो गया, पर एटलीस्ट 8 आवर्स के लिए आप कंटिन्यूस टाइप कर रहे हो और आपका काम खत्म नहीं हो पा रहा है. एंड आपके दिमाग में एक सिचुएशन आती है कि भगवान ठीक कर दे. आपका दिमाग, देखो भगवान को आपने बोल दिया, भगवान फोन पे थोड़ा था आपके साथ जो आपके हाँ मैं करता हूँ, ऐसे सुनना है कुछ. आपके दिमाग में ना कि हाँ भगवान ठीक कर देगा, आपका दिमाग एक अलग पॉजिटिविटी की तरफ जाता है. वो एक फेस को बोल के कि चल ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर दे, रब बैठा मेरे नाल, एज यू सेड इन पंजाबी. गॉड इज एवरीवेयर, राइट? भगवान ठीक कर देगा. आपके दिमाग में बस सिचुएशन आ गई ना, आपका एक बस हल्की सी पॉजिटिविटी आ जाती है दिमाग में, हल्की सी रेडियंस, एक हल्का सा चेंज आ जाता है दिमाग में. एंड आपके बोलने से भगवान ने वो ठीक नहीं करती सिचुएशन, लेकिन आपके दिमाग में वो पॉजिटिविटी आ गई, वो बोलने से आपका वो स्ट्रेस हल्का कम हो गया, आपको कुछ दिमाग में प्रेशर कम हो गया कि आप ही वो काम खुद खत्म कर पा रहे हो. एंड एंड ऑफ द डे, इवन व्हेन यू हैव डन ऑल योर वर्क, यू विल स्टिल थैंक गॉड फॉर इट. समझ गया मैं. तो इट्स लाइक यूजिंग गॉड एज एन एक्सक्यूज फॉर सेइंग कि अभी सोचो हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं एंड समबडी वेरी रिलीजियस who prays to God every day and begs that उसको 95 आ जाए, 95 आ जाए, और वो पढ़ता नहीं है, and suddenly he doesn't get 95 क्योंकि obviously praying does not give you marks. So then suddenly if he turns into an atheist and he scores marks while studying, तो उसको वही लगेगा भगवान है ही नहीं. That doesn't mean anything. कि I get the point कि using God as a medium for faith or hope in concerning times, but thinking of God giving you a purpose or giving you strength to such an extent would be kind of poisonous really. Because if anybody who thinks God has given them a purpose, everything else here on earth becomes nothing to him. People who think they have a purpose given by God. So what do you think about this one doha, which I remember we read it in like 6th grade or something, and the doha basically went like this. The Kabir Rahim, I don't know who wrote this doha, but he said that I don't pray, again it's the English version, I don't pray that God takes away all my problems, I just pray that he gives me enough strength to deal with them. So like Ruben said कि आपका प्रे करने से आपको अच्छे बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आ जाते हैं. अगर if there are two people playing on a cricket team, a soccer team, right? Everybody over here is religious, everybody over there is religious, right? And वो दोनों प्रे कर रहे हैं कि हमें जिताओ. And now you would think कि कौन जीतेगा, God किसकी सुनेगा. But here's the thing, right? सब कुछ God में, what God does is he gives you, I won't say reason, but this is what I feel. I'm not saying God gives, but like maybe what can happen is that you can reaffirm the purpose that you think you have, you can reaffirm it, and you can act towards that, and God can just be as a source of faith. Because let's not lie to ourselves, कोई भी situation हो, कैसी भी type की situation हो, the one thing that gets us through the tough times is like a higher force, like a God, faith in something. वो किसी का faith उसके गिटार में रहेगा, किसी का faith traveling में रहेगा, and then for some people faith God में रहेगा. So like that's the thing. इसने बोला भवनीत competition दे रहा हूँ देखो. क्वारंटाइन में बढ़ गया बाल मेरे. आज तूने headphones कैसे पहना है? Bro, the guy just forgot he's on mute. He's like unmuted and he's just like speaking out to himself. Accounts lecture था मेरे को यार. अरे मैं क्लास में बोला. हाँ तो भाई अकाउंट्स का लेक्चर चल रहा था, सर ने एकदम कुछ बोला था एंड देन ऑकवर्ड साइलेंस था एंड देन तू अचानक से स्पॉटलाइट पे आ गया सबकी, क्योंकि तेरे रूम से तेरे चेयर का किसी का पिप करके आवाज आया. देन यू गॉट स्पॉटलाइटेड एंड देन वी सॉ भवनीत ने आवाज किया कुछ एंड भवनीत ने ऐसे पगड़ी के पीछे हेडफोन्स पहना था एंड यू जस्ट स्पीक आउट लाउड. ओह देखो पाजी ने हेडफोन्स पहने.
I'm like, oh shit. सर भी हंस रहे थे भाई, सर भी हंस रहे थे. Be sure to send us your queries, emails, suggestions, reviews, whatever it is. If you liked it, Proposals and confessions. अच्छा लगा, like proposals नहीं and अच्छा confessions लगा. important. अच्छा, okay, let's make this a series. Whatever confessions you send us on email, if there's any, we'll read them out on the podcast. Anyways, अच्छा लगे like कर दो, नहीं अच्छा लगा dislike कर दो, subscribe कर दो, 1 second लगता है तुम्हारा.